Hello students. Last session we have studied about the biological classification which was classified the different scientists. But the most accepted and reliable classification was accepted Robert Whitaker. Five kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. These five kingdoms are: first one is Kingdom Monera. What organisms are contained in this kingdom? This is the most ancient, simplest, and kingdom Monera जो है is the ancient, simplest and the most abundant organisms. Bacterias are the major organisms in Kingdom Monera. In Kingdom Monera. These are very small in size. Hundreds of bacteria may present in a handful of soil. They are present everywhere. They are also present in extreme habitat, just like as hot spring, desert, snow, and deeper ocean where the life form is very few. They are found in extreme habitat such as hot spring, desert, snow, or deep in oceans where a few life forms can survive. These are the first inhabitant on earth, and they continue and they still continue to flourish. These are the main features of the Monera kingdom. And what are the characters of Monera? Next one is characters of Monera. Characters of Monera. What are the characters contained in Monera? First one, these are unicellular, colonial, means they are found in colony, or filamentous. Filamentous prokaryote means without nuclear membrane.
organisms. This is the main character of Monera. Second one, they are autotrophic or heterotrophic organisms. A few are autotrophic, but the vast variety of the Monera are heterotrophic. But the vast of the majority, they are heterotrophic, mostly parasitic. On the basis of heterotrophic, these are three types. They are three types. कौन से? हेटेरोट्रोपिक के बेस पे ये थ्री टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक. एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? द रिलेशनशिप वेयर द टू एनिमल्स और प्लांट्स लिव टुगेदर एंड बेनिफिट टू ईच अदर. जहां पर दो प्लांट या दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ साथ रहे, एक दूसरे को बेनिफिट करते रहे, इस प्रकार के रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और म्यूचुअलिज्म्स. तो ये तीनों प्रकार के हेटेरोट्रोपिक के अंदर ये तीनों प्रकार का मोड शो करते हैं, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक. इन हेटेरोट्रोपिक मोड में जो मोस्टली फाउंड होता है वो कौन सा होता है? पैरासाइटिक होता है. न्यूक्लियोइड्स, बिकॉज देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इट मींस जितने भी न्यूक्लियस के अंदर सब्सटेंस कंटेन होते हैं न्यूक्लियोइड, जिसको आप और क्या बोल सकते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस और इंसिपिएंट न्यूक्लियस नेग्ड. न्यूक्लियोइड जो होते हैं नेग्ड कंटेन होते हैं. क्या? डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन. न्यूक्लियोइड जो न्यूक्लियस के अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो है ही नहीं. इसका मतलब जो भी न्यूक्लियोइड सब्सटेंस है वो नेक्ड होते हैं, जिसमें डीएनए है, आरएनए है और हिस्टोन प्रोटीन है. डीएनए इसके अंदर जो डीएनए होता है सर्कुलर होता है बट डबल स्ट्रैंडेड होता है. डीएनए इज सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड. नेक्स्ट वन, इसके अंदर जो राइबोसोम कंटेन होते हैं वो 70S, राइबोसोम ऑफ 70S टाइप. व्हाट इज 70S? S स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. राइबोसोम कंसिस्ट टू यूनिट, एक लार्ज यूनिट एंड सेकंड वन इज स्मॉल यूनिट. वो लार्ज वन इज 50S, small one is 30S. 30S and 50S both combined and form a ribosome 70S. S stand for sedimentation coefficient. Fourth one is ribosome of 70S type. 70S. S stand for sedimentation coefficient. Ribosome consists two units, one is large and other one is small. Ribosome has two subunit, one is large, 70S है इसके अंदर, वन इज लार्ज, तो लार्ज कितना का है? 50S. सेकेंड वन जो है, सेकेंड वन इज स्मॉल, दैट इज 30S.
and which form the 70S. S stand for sedimentation coefficient. Next one. There is no nuclear membrane present in these organisms. Therefore, the cell organelles are without बाउंडेड मेम्ब्रेन. क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए जितने भी इसके सेल ऑर्गेनल्स हैं विदाउट बाउंडेड ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन इज द रेस्पिरेटरी एंजाइम found in plasma membrane. Mostly reproduction in Monera kingdom is asexual mode. In this kingdom, the bacteria reproduce asexually. Means mostly reproduction इसके अंदर कौन सा होता है? Asexually, where there is no need of male and female both the parents. These are the main features of kingdom Monera. On the basis of shape, the Monera या bacteria are 4 type. On the basis of shape, the bacteria are 4 type. शेप के बेस पे मोनेरा के जो बैक्टीरिया हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन, कोमा टाइप, मीन्स जिनकी शेप कोमा के आकार की हो उनको बोलते हैं विब्रियम. मैक्सिमम सिंगुलर है तो विब्रियम, प्लूरल है प्लूरल है तो क्या बोलेंगे? विब्रियो. और उनकी शेप जो होती है कुछ इस वे से. विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया जो हेजा करता है. सेकंड वन इज स्पेरिकल. स्पेरिकल शेप में होते हैं, उसको बोलते हैं, सिंगुलर को बोलते हैं कॉकस एंड प्लूरल तो कॉक्सी. कॉकस और प्लूरल तो क्या बोलेंगे? कॉक्सी. स्ट्रेप्टोकोकस. थर्ड वन, रोड शेप, spherical structure, mostly they are colonial. It means सिंगुलर शो नहीं करना आपने, इस कॉलोनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो मैक्सिमम 4 to 5 शो करने का नहीं. इसी प्रकार से स्पेरिकल हैं, कॉलोनी में प्रेजेंट हैं. रोड से सिंगुलर है तो बोलते हैं बेसिलस और प्लूरल तो बेसिली. बेसिलस और प्लूरल है तो बेसिली. लैक्टोबैसिलस रोड शेप है. स्पोर कंटेंट होते इसमें. एंड फोर्थ वन इज स्पाइरल शेप. सिंगुलर को बोलते हैं स्पिरिलियम एंड प्लूरल है तो स्पाइरला.
On the basis of shape, the bacteria are of four types: coma type, Vibrio या Vibrio, spherical, coccus or cocci, rod shape, Bacillus or Bacilli, spiral, Spirillum or Spirella. These are the four types of bacteria on the basis of shape. Life processes in bacteria. Life processes या bacterial life processes. Bacterial life processes. Life process in bacteria possesses the metabolic activity, the metabolic activities of respiration and nutrition. कर दिया में लाइफ प्रोसेसेस बैक्टीरियल के अंदर लाइफ प्रोसेस जो हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। वो दो मेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, रिस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन रिस्पिरेशन। ऑन द मोड ऑफ रिस्पिरेशन, bacteria are of two groups: aerobes and anaerobes. How the bacteria respire? In presence of oxygen, absence of oxygen. If they respire in the presence of oxygen, those are called aerobes, aerobic. And in absence of oxygen, those are called anaerobes or anaerobic. Each group of two types. दो ग्रुप बनाए, aerobes and anaerobes. Each group of two types: strict और obligate. एक टाइप है strict और obligate, and the second one is facultative. These are the two types in each group bacteria. First one, हम क्या करते हैं? एरोब्स. एरोब्स क्या होते हैं? एरोब्स. एरोब्स में कौन सा पार्ट लेते हैं? एरोब्स स्ट्रिक्ट और ऑब्लिगेट भी होता है, एरोब्स फैकल्टेटिव भी होता है। इसी प्रकार से सेकंड वन एनॉर्ब्स स्ट्रिक्ट और ऑब्लिगेट होता है, या एनॉर्ब्स फैकल्टेटिव भी होता है। तो फर्स्ट वन इज एरोब्स, कौन सा? स्ट्रिक्ट और ऑब्लिगेट। These are the bacteria which survive in presence of oxygen. These are the bacteria which can survive in presence of oxygen. Those are called aerobes strict or aerobes obligate. They have special enzyme which produce the energy
in presence of oxygen. In absence of oxygen, they cannot survive. Or die. For example, इसका अपने एग्जाम्पल इसका सॉरी ये वो बैक्टीरिया होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन करते हैं, जिसके कारण से ये इनके अंदर जो स्पेशल एंजाइम है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण से वो एटीपी के रूप में एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस कर देता है. इफ देयर इज अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन नॉट सर्वाइव. फॉर एग्जाम्पल बेसिलस सबटिल्स. इसी का नंबर सेकंड टाइप जो आपका है एरोब्स फैकल्टेटिव. दीज बैक्टीरिया नॉर्मली, ध्यान से सुनिए, एरोब्स हैं. दीज बैक्टीरिया नॉर्मली सर्वाइव इन एनारोबिकली. उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तो इनको ऑक्सीजन चाहिए. मोस्टली दीज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. They can normally survive anaerobically, but they have the capability to produce energy in presence of oxygen. It means mostly they need oxygen. These are photosynthetic bacteria. ये वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक एक्टिवेट होते हैं. क्लोरोबियम फॉर एग्जाम्पल, क्लोरोबियम. Aerobic bacteria, it means these are the bacteria in presence of oxygen. They respire in presence of oxygen. Two types, aerobes strict or obligate और aerobes facultative. इसी प्रकार से सेकंड वन एनारोब्स. एनारोब्स कौन से होते हैं? इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं, वो भी टू टाइप्स के. एनारोब्स इसी के आगे लिखते हैं हम एनारोब्स स्ट्रिक्ट और ऑब्लिगेट. दूसरा हमारा क्या होगा? एनारोब्स फैकल्टेटिव. आप इसको रीड कर दीजिए. Anaerobes strict or obligate. These bacteria can survive in absence of oxygen. ये ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ एरोबिक बैक्टीरिया से लेस होती है. बट द ग्रोथ ऑफ these bacteria is slower than the aerobes because the production of energy is very less. सर्वाइव कर सकते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ये, बट इनके अंदर जो ग्रोथ होती है एरोबिक बैक्टीरिया से लेस होती है. क्यों? इसमें एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो लेस होता है. फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम. और इसी का सेकंड पार्ट है एनारोब्स फैकल्टेटिव.
ऑपोजिट है एक लाइन, ये एरोब्स जो फैकल्टेटिव दे कहते हैं दे कैन नॉर्मली सर्वाइव एनॉर्बिकली, तो जो एनॉर्ब्स फैकल्टेटिव है दे कैन नॉर्मली सर्वाइव एरोबिकली। They can survive, yeah, they can normally respire aerobically, but the production of energy is very less. So in sufficient amount of oxygen, they are not able to survive long time in excess of oxygen. It means they can survive a less amount of oxygen. तो एनार्बिक फैकल्टेटिव यही होते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल स्यूडोमोनास, this is the process of respiration in Monera. Clear?